This is the default screen of an AutoCAD drawing. Whenever you will open a new file of an AutoCAD drawing, you will come across this type of screen. So let us just have a brief introduction to the default interface of an AutoCAD drawing. Starting with the workplace of the AutoCAD screen. This central black portion is regarded as the workplace of the AutoCAD drawing. ये वो पोर्शन है जहाँ पर आप अपनी ड्राइंग्स को देख सकते हैं. Whatever input you give to the AutoCAD is exhibited at this working place. At the right of the working place, you can see this view cube. This view cube gives information about the orientation of your drawing. It basically imparts the information that whether you are working in a 2D wireframe, in a 3D wireframe, and whatever perspective you are watching. Suppose अगर आप एक elevation को देखना चाह रहे हैं तो ये व्यू क्यूब आपको as it is elevation का perspective शो करेगा. अगर आप प्लान को देखना चाह रहे हैं तो प्लान की जितनी भी सेटिंग्स हैं वो आप इस व्यू क्यूब के ज़रिए कर सकते हैं. सो बेसिकली व्यू क्यूब टेल्स आउट अबाउट द ओरिएंटेशन ऑफ योर प्रोजेक्ट, अबाउट ऑल द डायमेंशंस एंड डायरेक्शंस एज वेल एज द पर्सपेक्टिव. नाउ बाय डिफ़ॉल्ट this view cube is showing you the top version of your drawing. It means कि ये आपको एक प्लान शो करेगा. जो भी ड्राइंग आप शो कर रहे हो यहाँ पर ड्रॉ करेंगे वो इनफैक्ट एक टॉप व्यू की शक्ल में देखा जाएगा. सेकेंडली इट इज़ इम्पार्टिंग द इंफॉर्मेशन ऑफ अ 2D वायर फ्रेम. दैट इज़ कि जो काम आप यहाँ पर करेंगे वो 2D कंसीडर होगा. अगर आप यहाँ पर 3D के काम को एक्टिव करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप व्यू क्यूब को एक्टिवेट करके यहाँ पर 3D वायर फ्रेम को ले आएंगे. तो अगर आप 3D में काम कर रहे हैं इट विल गिव इंफॉर्मेशन अबाउट द 3D वायर फ्रेम. आप एलिवेशन पे काम कर रहे हैं, आप नॉर्थ में काम कर रहे हैं, सब इंफॉर्मेशन आपको इस व्यू क्यूब के ज़रिए यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगी. Now moving on to the title bar. This is the title bar of the AutoCAD drawing. It displays information about the version of AutoCAD you are using and also the drawing name. One thing should be kept in mind that the extension of AutoCAD is DWG. So whenever you save a file, it should be with an extension of DWG. Along with the information of the version and drawing name, the title bar displays the information of how to save a file, how to print the document, and all such information that you regularly observe in any of the Word and Excel file. Now just moving on to the quick access ribbons. At the top of the workspace, at the right and left, you can observe that there are certain ribbons that are intended for the quick access. By the word quick access, it means that it gives an easy access to a certain command. अगर आप AutoCAD के ऊपर काम कर रहे हैं तो you have two options. Either you put the command in the command line. आप command line के अंदर अपनी command को लिख के उसको activate कर सकते हैं. And the second option is that आप इन ribbons को use करते हुए एक quickly अपनी command को activate कर सकते हैं. How to activate this ribbon is that you simply right click on that portion other than the workspace and then moving on to the AutoCAD. इस AutoCAD में आपके पास काफ़ी ज़्यादा ribbons मौजूद हैं. जैसे जैसे आप इस स्क्रीन के ऊपर काम करते जाएंगे वैसे वैसे आपको इन ribbons की पहचान होती जाएगी. फिल वक्त कुछ ribbons हैं जो AutoCAD में बाय डिफ़ॉल्ट एक्टिव हैं और ये वो ribbons हैं जो आपको यहाँ पे टॉप और आपके राइट और लेफ़्ट कॉर्नर्स में नज़र आ रहे हैं. Now moving on to the bottom of the drawing area. At the bottom you have this portion. This bar is known as the command bar. ये वो जगह है जहाँ पर आप अपनी कमांड को लिखते हैं, यानी आप यहाँ पर AutoCAD को इनपुट देते हैं. This is called as the command line of the AutoCAD drawing. At the bottom of the command line there is a ribbon.
that gives information about the settings of the workplace. आप अपनी वर्कप्लेस पे किस तरह काम करना चाहते हैं, क्या क्या ऑप्शंस आपको वहाँ पर अवेलेबल होनी चाहिए, ये सब इंफॉर्मेशन आपको इस बार के थ्रू मिलती है. Any detail about the working drawing, working space can be viewed in other attached videos. That is all for today. If you think this information is useful, so then do like, share and subscribe. Thank you.